अपनी लाइफ और हेल्थ एंड लाइफ चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एनर्जेटिकली सबसे आसान सबसे क्लियर उपाय जो है वो है प्राणिक. Wow, beautiful. Very, very good one. Good one. Thank you. Okay, so the next question that I have is, how does clothes contribute? I mean, what do we mean by chronically healed clothes? What do we mean by healed clothes? और कपड़े से healing कैसे होती है? लोग कहते हैं कपड़े पहनने कैसे healing हो सकती है? How does it work? So that is something which we really need to make it clear. Good question. Atma Namaste, Om Shanti. Today in our studio we have Astha Sharma. Thank you, Astha, for being here. It means a lot to us. Pleasure. And Astha has a very interesting, I mean, what to say? Yesterday, when you saw our podcast yesterday, right? Tushar mentioned about the third person. So that completes our holy trinity, I would say. So हम तीनों का ये था कि हम आगमन सूत्रा start करें as a brand. So this is our brainchild, and it gives me immense pleasure to introduce another team member of Agman Sutra in front of you. Astha is into yoga, naturopathy. She's into pranic healing. She's a trainer. She's been my basic pranic healing trainer. So that's how we met. That's how universe planned it for us. And the journey started in 2020, August. Yes. And it's what, 23, towards the end of the year, and we are sitting here. So 3 years completed already. I know. It felt like that. बहुत खुश हूँ कि आप आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं. You've been helping us, supporting us, and it is very important for me to introduce to you our audience and introduce you to our audience both ways, because a lot of people have questions how Agman Sutra works, healing grows होती है, क्या करते हो आप लोग, प्राणिक healing क्या है, बहुत सारे ऐसे questions हैं जो हमारे, because this is a very unique concept जो हमने create किया है मिलके, but उस unique concept को लोगों तक समझाना पहुंचाना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. तो इसलिए मुझे लगा, जब मैं अपनी मार्केटिंग टीम के साथ बैठती हूँ, पीपल आस्क मैम कैसे काम करता है, हमारे पूरे ऑफिस में सब आपकी ब्रांड के साथ काम करने के लिए उत्सुक थे, बिकॉज किसी ने कुछ सुना ही नहीं था ऐसा. तो अब मुझे लगा कि a video would be the best way to reach to our audience and make everybody understand what we are doing. True that. So that's why we decided to start these podcasts. So this is a start. I hope we continue and have many more like these and keep giving the flow that we have and the channels we are to everybody else. So I have a lot of questions lined up for you. Before you start, this will be good for me and for the audience to be on the same page with you. I would really like to ask here, what was your inner journey of bringing your brand, your clothing and healing together? What inspired you? What connected the dots for you? Interesting. So for me, I would say Agman Couture has been a brand for us since 2017. I started this business. 19, we scaled up and got into high-end customizations and doing all the wedding cruises and everything, working on Lucknowi chicken. So we've been working on this since 2000. Now it's been, what, 2017, 2019, and many more. But when COVID happened, that is where the problems started happening with the whole world, right? And we have to understand this very basic thing, which came to my कि क्या करें, time बहुत था, कुछ करने को नहीं था. So I was like, spirituality was another side which I wanted to explore for a long time. I hail from a lineage. My nani would do her sadhana. I've seen her doing all that. So मैंने कहा ठीक है, explore करते spirituality, and I started reading, I started studying, started doing courses. Pranic healing happened to be one of the courses which I did, and where you happen to be my basic trainer. So ड्यू टू कोविड आपने मेरे को यहीं पे ट्रेन किया था, इसी जगह पे, इसी स्टूडियो में सारी ट्रेनिंग्स हुई हैं मेरी. बेसिक, फिर मेरे स्टाफ के बेसिक प्राणिक हीलिंग कोर्सेज खूब सारे से स्टूडियो में हुए हैं. एडवांस हमारा यहाँ पे हुआ. दैट वाज अ वेरी, आई वुड से वी वर वेरी ब्लेस्ड. तो थैंक्स टू यू कि यू फैसिलिटेटेड अस. तो उसके बाद पता नहीं, व्हेन आई वाज डूइंग ऑल दीस कोर्सेज, द विजन्स स्टार्टेड कमिंग समवेयर कि जो है ये स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट मेंट फॉर वेरी फ्यू पीपल. हम बोलते हैं ना कि टाइम होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी करने के लिए. अरे तुम्हारे पास टाइम है इसलिए तुम ध्यान दे सकते हो. आई हियर दिस, अरे तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है, तुम कुछ भी करो. वी आई एम अ बिजनेस वुमन, इट्स नॉट दैट आई हैव टाइम, बट आई हैव अ फैमिली. फैमिली इज अनदर थिंग. सो इट इज अ, आई थिंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट्स ट्रू. तो फिर प्रॉब्ली व्हेन आई वाज इन दिस डायलेमा, जब ठीक है, तो विजन्स वर कमिंग, व्हाई दिस इज not for just
few special people. This is for everyone. It's supposed to be spread to everyone. And that is when I realized I can provide the spiritual energy or the divine energy or the energy in form of different consciousness which we are speaking about today through the medium of clothes. Lovely. बिकॉज क्लोथ्स तो हम रोज पहनते हैं, एवरीबडी वेयर्स क्लोथ्स. तो क्लोथ्स के थ्रू हमने शुरुआत करी अपनी इस जर्नी की. कैसे? फिर आई स्टार्टेड स्टडिंग सम टेक्स्ट, वेदास में कॉन्शियसनेस के बारे में अपने आप बोला गया है दैट कॉन्शियसनेस परवेट्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स and you are the maharathi in that. So that's why I have you. And as a healer, when you work also on our clothes, that also I would like you to throw some light on that part. What is pranic healing? Since you're a trainer into pranic healing, you've been here for so many years. बहुत सारे सवाल हैं मेरे. So I think let's start one by one. So yep, that's what my journey is, and that's how spirituality and fashion came together. And we started creating spiritual clothing, spiritually healed clothing. Yeah, and you and Tushar have been very effective contributors. Idea आता था, then I'll call up Pasta asking, Asta ये idea है, आज ये vision आया, कहते हैं हाँ, this is what it means. You know, she's very energy sensitive. She can see, she can understand energies in a very different manner. तो मेरे लिए भी अच्छा था to have a person who was a to guide. the best of my capacity, guys. But it did help. So yeah, so I would start with this that बहुत लोग जानना चाहते हैं प्राणिक healing क्या है. Okay. That is my first question. Yeah, let's start with the basics. What is pranic healing? So the first word, what is prana? Prana Shakti, pran, pneuma, chi, ki. There are lots of words in every religion, every region, every language which defines prana. So Master Chokoksui, GMCKS Master Chokoksui, why did he choose the word prana specifically? Because one, if you go back into the history, the written text mentioning prana, it finally comes down historically. The first one was in Bharat also, only, I guess, I believe, to the best of our historic knowledge. So he wanted to dedicate the origin of prana to the country that it came from. That's how the word prana came. Everything, be it living, be it non-living, be it conscious, subconscious, unconscious, plants, clothes, us, our furniture, our furnishings, the cushions we are having, the stole I'm wearing, everything has some amount of prana, along with that some amount of consciousness. Like a dog will have a consciousness, a child will have a consciousness, we are having consciousness. As humans, we are in this realm that we can see, we are at the top notch. But it doesn't mean other things do not have prana. Now, if they have prana, their energy is the word we use in English, it will affect us. If it is for our contribution, we'll say positive prana. If it is something which is making us stuck up, which is making us not progress in life, or maybe slowly progressing in life, or maybe it is giving us something which is more of a disease nature, we'll say this prana is affecting us negatively. So pranic healing, that healing which helps anything and everything, including the animate, inanimate beings and objects, to heal itself, to thrive, to perform at its best potency. That will be pranic healing. I mean, thank you. It makes a lot of clarity into my mind, and I am sure our observers, our viewers must have got the clarity. But मुझे लगता है थोड़ा सा हिंदी में भी बोला जाए तो बहुत जरूरी हो जाता है कि प्राणिक हीलिंग क्या है. ये हम अगर हिंदी में जान पाए तो बहुत अच्छा रहेगा. प्राणिक हीलिंग क्या है? हमारे शरीर में, हमारी एनर्जी बॉडी में जो ऊर्जा का संचार है, उस ऊर्जा के संचार को नियमित करना, जिससे हमारी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं और हमारे जीवन में जो सबसे बेहतरीन हो सकता है हमारे लिए आ जाए. किस किस फील्ड में? फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ. स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होगी? कई बार लोगों के पास सब कुछ होता है और वो बोलते हैं कुछ नहीं है लाइफ में, शांति नहीं है, कितनी सारी चीजें हैं. दैट इज नथिंगनेस. आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ में डिसबैलेंस है. फाइनेंशियल हेल्थ, अ सेंस ऑफ पीस, अ सेंस ऑफ जॉय, एक फैमिली से जुड़ाव का एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव. ये सारी चीजें
हमारे ऊर्जा शरीर की हीलिंग से हम अचीव कर सकते हैं, और जो विधा इसको बहुत आसानी से कर सकती है और करा सकती है वो है प्राणिक हीलिंग। ट्रू ट्रू ट्रू। आई होप दिस वाज इजी। हाँ, इट वाज इजी बिकॉज़ मुझे लग रहा था क्योंकि बहुत भाई हम इंडिया में बैठे हुए हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ व्यूअर्स हु आर आल्सो हु वुड लाइक टू एंड नो। लैंग्वेज बैरियर नहीं हो सकती ज्ञान प्राप्त सही बात, करने का, ये बात तो मैं कोई भी सी भी जानती हूँ। लैंग्वेज। ये तो मैं भी मानती हूँ बहुत अच्छे से। पहले मैं अपने सारे वीडियोस इंग्लिश में बनाती थी ना, एवरीबॉडी वाज लाइक ए भाई भाई इन इंग्लिश, यू आर इन इंडियन राइट? तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं हिंदी में बनाती हूँ। फिर हिंदी भी बहुत ज्यादा शुद्ध, जो अभी आपने शुरुआत करी तो सोच शुद्ध हिंदी, आई वाज लाइक ओ गॉड इसीलिए आई वाज लाफिंग। तो इंग्लिश में बनाना पड़ेगा हमें, जो कि हमारी आज की जनरेशन समझ पाए, हु वांट टू अपनी लाइफ और हेल्थ एंड लाइफ चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एनर्जेटिकली सबसे आसान, सबसे क्लियर उपाय जो है वो है प्राणिक। wow, Was beautifully this said, easy? very very good one, good one. Thank you. Okay, so the next question that I have is how does clothes contribute? And what do we mean by chronically healed clothes? What do we mean by healed clothes? और कपड़े से healing कैसे होती है? लोग ये कहते हैं कपड़े पहन के कैसे healing हो सकती है? How does it work? So that is something which we really need to make it clear. Good question. Let's start with a simple imagination. आपके कमरे में जहाँ पर आप उठते हैं और सोते हैं और मैक्सिमम समय गुजारते हैं, यूजुअली आपका वो बेडरूम होता है या लिविंग रूम या स्टडी रूम। वहां पे कोई भी एक चीज क्विकली इमेजिन कीजिए जिसको देख के आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। बस टेक 1 सेकेंड, कोई भी एक चीज। मेरे बोलते ही मेरे दिमाग में मेरे बुक्स का एक पूरा ढेर सा मैंने लाइन अप कर रखा है। आंख खुलते ही मैं पसंद करती हूँ उसको देखना। मेरे को भी मेरा स्टडी कॉर्नर याद आया जहाँ पे मैं बैठ के मेडिटेट करती हूँ या पढ़ती हूँ। आई थिंक दैट इज व्हाट आई तो रिमेम्बर। कोई एक चीज राइट अवे पॉपअप हुई आपके हेड में, आपकी टेबल, आपकी चेयर, आपका बिस्तर। अब ऐसे ही अपना फेवरेट कपड़ा इमेजिन कीजिए जिसको पहनकर आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। कोई ना कोई जरूर आएगा। इंटरेस्टिंगली जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसा ही एक स्टोल है मेरे पास जो स्टिफ मटेरियल का है, आपका ही है। व्हेनेवर आई वेयर दैट, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बहुत प्यार से मुझे रैप कर रखा है या हक कर रखा है। आई लव दैट वन। सो ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था ये समझने के लिए कि हर चीज आपको प्रभावित कर रही है इमोशनली और मेंटली और एनर्जेटिकली। ठीक है, अब सबसे ज्यादा पूरे दिन 100% क्या कैरी ही करेंगे। मोबाइल कभी कभी भूल सकते हैं, गाड़ी में हो सकता है कभी कभी नहीं हो, है ना। वॉलेट भी हम लोग अक्सर भूल जाते हैं आजकल। बैग्स हम रेगुलरली चेंज करते हैं। That's true. Actually, mobile, a lot of people have started putting it out of their bedrooms. I know so many conscious people that they say our bedroom is no mobile zone. We can have a separate podcast on mobiles particularly, you know. Very interesting. We can totally have a separate podcast on that. But true, कपड़ा एक ऐसी चीज होती है जो हम हमेशा धारण करते हैं भाई। हमेशा। Until unless आप अकेले हो और अफोर्ड कर सकते हो रात को सोना without clothes. Everyone is wearing clothes. Does this have to be censored on podcast? I guess people will really relate with this, that clothes is something you're wearing every day. Plus आप कपड़े पहन के बहुत जगह जाते हो, वो कपड़े आपकी उन सारी जगहों की ऊर्जा को लेते हैं। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ हमारे हिंदू संस्कृति का ही। हम अगर किसी की मृत्यु उपरांत शमशान जाते हैं चिता जलाने के लिए, दाह के लिए, हम वापस आकर राइट अवे क्या करते हैं? कपड़े उतारते हैं, नहाते हैं और राइट अवे दूसरे कपड़े पहनते हैं। क्यों आया ये? और उन कपड़ों को आप बहुत ही पुराने प्रचलन वाले घरों में जाओगे तो नमक के पानी में भी डाला जाता है। क्यों? प्राणिक हीलिंग सीखे, यू विल गेट द आंसर। गुड वन। सो सिंपल सी चीज है, आपके कपड़े जैसे आप अगर बहुत ही शोर भरे माहौल से गुजरे हैं, बहुत ही ट्रैफिक से भी मैं अभी आ रही थी और ऑब्जर्व कर रही थी, आपकी साइकी को वो इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली, आपको थका देगा, आपको परेशान कर देगा। ऐसे ही वो कपड़े भी हर उस जगह से उस ऊर्जा को ले रहे हैं। आप भले ही उसको फिजिकली वॉश कर दें, एनर्जेटिकली इम्प्रिंट्स रह जाएंगे। ये कुछ कुछ ऐसा है कि आपने ग्रीस से अपने फिंगर्स को प्रिंट किया और फिर आपने उस कपड़े पे लगा दिया। अब उस कपड़े का आप एनर्जेटिकली क्या कर सकते हैं कि वो कपड़ा उस सारी नेगेटिव एनर्जी को हटा दे और पॉजिटिव एनर्जी को फिर से ले ले। ये कुछ कुछ ड्राई क्लीन जैसा और उसके बाद परफ्यूम लगाने जैसा है। तो जब हम प्राणिकली क्लोथ्स को डेली हील कर रहे हैं तो उस पूरे दिन में उन कपड़ों में जो भी नेगेटिव ऊर्जा, आपके लिए जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसमें समाहित हुई थी, वो वॉश आउट हो गई प्राणिक हीलिंग से, और उसके अंदर भरपूर ऊर्जा जो आपको शांति दे, संयम दे,
क्लैरिटी दे, पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशंस दे, या फिजिकल एक्शन के लिए प्रेरित करे, वो हमने उसके अंदर डाल दी। ये बिल्कुल एक गंदा पानी बकेट में से निकालना और फिर फ्रेश पानी, उसमें थोड़ी सी खुशबू डाल देने जैसा है। इट इज एज सिंपल एज दैट इफ यू हैव लर्न प्राणिक हीलिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, everybody doesn't have time. True. That's the main problem, I think, these days. Everybody's so busy in their health skeletal life, meeting the ends, and बहुत सारी चीज जिसके पास टाइम है, उसके बाद और भी सोशल कमिटमेंट्स है फॉलो करने के लिए, तो फिर टाइम का तो बहुत बड़ा एक सो थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस, आपको घर का बना खाना खाना पसंद है, पर आपके पास घर का बना खाना खाने का टाइम नहीं है, तो आप क्या कहीं से घर का बना खाना आज की तारीख में खरीद सकते हैं? बहुत जगह पे अवेलेबल है ना होममेड फूड कितने सारे आए हैं। आपको पॉजिटिव एनर्जीज पसंद है, आप चाहते हैं हमारी लाइफ में हम एक एक्स्ट्रा पुश मिले जो कि एनर्जेटिकली हमें हेल्प करे, जिसमें डिवाइन हीलिंग्स हो, ब्लेसिंग्स हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप प्राणिक हीलिंग सीख सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है रेगुलरली ये सब प्रैक्टिस करने का, तो आप प्राणिकली हील क्लोथ्स को रेगुलरली पहन रहे हैं, तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पे काम कर रही है। अगर लोगों को बेकिंग का शौक है, तो आप आइटम बेक करने के लिए डालते हो ना, वो कैसे उसके अंदर इन्फ्यूज हो रहा होता है बटर, तो आपकी बॉडी लगातार उस पॉजिटिव एनर्जी में इन्फ्यूज हो रही होती है। एंड कपड़े डेली हील हो रहे हैं, तो वो सम अमाउंट ऑफ डर्टी एनर्जी रोज निकल रहा है, सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी रोज आ रहा है। बिना कुछ करे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी पुश लगातार मिल रहा है लाइफ में। तो आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर डील। फेयर डील। तुषार कहती मैंने तो और कोई कपड़े ही पहनने छोड़ like even for me, you know, wearing something from the other brand, this is a jacket I don't create, I'm being very honest, but I have my logo, I've got this Om Mani Padme Hum का पूरा मैंने मंत्रा इस पे पीछे स्वरोस्की से बनवाया हुआ है। Please show it. Tilt a bit. Because I love this one. I have a jacket where I have a combo of yin and yang on this one. I love wearing that. So what I do, मतलब this was something which was also a vision that came to an idea. I think I'm just a channel. ऊपर से आता रहता है, मैं डाउनलोड करती रहती हूँ, I keep putting it out. So it was कि ठीक है, उस कपड़े को आप कैसे उसकी एनर्जी बदलोगे? We can definitely heal the product of other brand as well, not a problem हमारे पास. But इसको मैंने और ज़्यादा enhance करने के लिए I just put a mantra. And mantra, that is mantra of compassion and mercy. I think all the Buddhists know this mantra, Om Mani Padme Hum. We can do a podcast for mantras as well. Oh, that yes. would be a beautiful podcast. I was discussing with Tushar as well. So yeah. I'll also add over here. So when we do the healing of clothes, it's not the clothes only we are healing. जिस स्पेस में क्लोथ्स बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वो जो डिजाइन्स हैं, वो जो लोग उन्हें बना रहे हैं, वो बनाते टाइम उनके दिमाग में और इमोशंस में क्या चल रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ द स्टाफ, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर बिजनेस का क्या एटीट्यूड है, इन सारी चीजों की वन बाय वन हीलिंग होती है। इट इज नॉट ओनली द क्लोथ, इट्स लाइक आप किस मन से खाना बना रहे हो एज अ गृहिणी ऑफ द हाउस, एज अ अन्नपूर्णा ऑफ द हाउस, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी बच्चों को मिलती है, राइट? इसीलिए हमारे प्रचलन में बहुत वैल्यू दी गई थी जो खाना बनाते हैं, और आज भी हम मानते हैं उनकी शुद्धता पवित्रता को, मन की। बिल्कुल ऐसे ही जब कपड़े आप पहन रहे हो और लगातार लंबे समय पहनोगे, वो किस जगह बन रहे हैं, कौन उन्हें बना रहे हैं, किस भाव और विचार से बना रहे हैं, ये सारी चीजें उनमें एंकर हो जाती हैं। That is so true. I remember Asta called me one day, Neha, is everything okay? I can sense this kind of and this was nothing to do with the energy of the clothes, okay, right? So there's something I was going through internally, and she could, something is, so I don't want to mention here what exactly was it. So I was like, yeah, I'm going through a phase which was so, I mean, everybody has that. I'm not saying हमने कपड़े पहन लिए तो हमारी life perfect हो गई, और but you know phases हैं, ups and downs, but then we get the strength to look at that situation in such a positive manner that, you know, life seems to be a magic. See, the idea is never in the schools of spirituality, be it pranic healing and arhatic yoga or any other, कि life में challenges आना बंद हो जाए. And trust me, आप 5 दिन गुजारिए लाइफ में, कोई challenges नहीं है, आप challenges को invite कर लेंगे, क्योंकि बहुत boring हो जाता है. बहुत boring हो जाता है. True, I know. कोई बोल रहा था आज, today happens to be my brother-in-law's and sister's anniversary. My sister was wishing सब couples सुख और शांति का जीवन व्यतीत करे. तो राज was saying this means कि वर्ल्ड से भूखमरी मिट जाए, ये तो वो वाली कामना हुई कि हंगर हट जाए, चीजें हट जाए. तो मैंने कहा actually, you know, it's good for the couples to fight because we know it's good, everything is right the moment the couple stops fighting. भैया कुछ तो question.
It's good truthfully, to argue. Healthy argument is always honestly, good. yes. To grow is to have some friction. To have some friction will give you some desire to grow out of it. तो constant growth का एक बहुत simple सा symbol है life में, कहीं पर आप थोड़ा बहुत fight out कर रहे हो क्या, struggle कर रहे हो क्या, teething होती है, teething के issues होते हैं, तभी तो दांत बाहर आते हैं, right? So शांति हो और अगले जो challenges हैं उनको handle करने की हमारे पास क्षमता हो, फिर हम उनको क्रॉस करेंगे और अगले चैलेंजेस को हैंडल करने की क्षमता हो। और ये जो फोर्स है, जो ये हेल्प है, ये हमें कहाँ से मिलती है? हमारे फ्रेंड्स से, हमारी फैमिली से, हमसे खुद से, हमारे गुरु से, हमारे इष्ट से। अगर आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं तो उनसे, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं तो उनसे, आप मेडिटेशन, ध्यान, योग करते हैं तो उनसे, और अगर आप प्राणिक हीलिंग करते हैं और कराते हैं तो उससे भी। ये सब जरिए मात्र हैं हमारी लाइफ को एक बेहतरीन दिशा देने के लिए। ऊपर भी जाएं तो ऊपर वाला बोले यस, सही बात है। यू लिव्ड अ ग्रेट लाइफ। That's so true. That's so true. So I think बहुत ही अच्छा conversations. I want to go Oh, it so was much amazing. more, and I think इस वाली podcast को यहीं पे end कर सकते हैं, and then we can Absolutely. continue another episode because उससे हमारे लिए आसान होगा, because Right. कितना attention सब customers को, sorry, customers क्या you, the viewers. So sorry, I'm so. And the customers, because people who buy Oh your yeah, stuff, of they course they, will they had so many questions, you know. And yes, I also want to address the color psychology. That's one thing we should take. We just touched like what couple of questions of what we originally planned. What time are we on? 24? 21 minutes. 21 minutes. Perfect. The time flies. The thing with me and Neha, I would really like to share with you guys, you know, we are very organic people. We are not scripted. Oh my God, that's true. But So, एक बात से दूसरी बात निकलती है. But I really hope and I really bless that all of us are more inspired and more touched to connect with our own energy and with our own spiritual being. That is the whole purpose of the whole activity Neha is ever doing. To make money is great. Money is useful. It helps us to spread the work that we are doing. The original purpose is bring in more people to remind them that we are the superpower and we are constantly connecting with the superpower that we are. Healed clothes are one of the ways of helping us to do that. that is so true. I mean, I totally agree with it. हम लोग खुद का अस्तित्व ही भूल चुके हैं कि who we are. That grandness and glory. इतना materialistic उसमें घुस चुके, which is pretty important as well. I say balancing out, as Master says, spirituality and prosperity goes hand in hand. That's the best quote of Master Chokoksai, I always say. He said, and money should be in hand of spiritual people. पैसा हमेशा आध्यात्मिक लोगों के पास होना चाहिए, जिससे कि वो पैसा सही दिशा की तरफ चैनलाइज हो। आज हमारे पास जब भी ये पैसा होता है, हम जब भी जो दशांत बोलते हैं 1/10 of our earnings, where does it go? It goes to food for hungry. It goes for a lot of good causes. That is why he says, भाई Porsche से निकलो और spirituality की बात करो. So for every viewer, whichever car that you love, may you have that. And may you go to your meditation experiences in those cars. So people are more inspired to have spirituality and material life together. And I think that's the essence of Agman. You know, fashion with bling and spiritual bling, everything goes hand in hand. We all can do it. And it's something which not everybody can be a yogini, right? कि सफेद कपड़े वस्त्र धारण करके, when I go to Brahma Kumaris, I wear white. Every morning I wear white and I go. And I feel nice. It's a very different feeling. But everybody started thinking, मैंने पिछले उसमें बोला भी था कि तुमने क्या सफेद धारण कर लिया है? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारे कपड़े पहनती हूँ। तो ना पर्पसफुली चूज डार्क कलर्स टू वेयर। वो भी मैं कलर साइकोलॉजी रिमाइंडर है कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा पवित्र है। तो ये स्वामान बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। आज सोचेगा इसके ऊपर पूरे दिन, मैं कौन हूँ? That's a good one. We can do swamans every time. Yeah, I would love to do that. Your swamans have so much power and such a positive I think it is not. It's all. I think I get it from Brahma Kumaris. Didis tell us, and it's Baba Shiv at the end of the day, the Nirakar. They're very powerful. We can definitely do a podcast on that. So yeah, we are not ending the session after. I think that's how it goes. Oh God! So how long is it? 30 minutes now. Wow. Lovely.
Anyways, chalo, thank you so much, everybody. We hope to see you again. Atma Namaste. Om Shanti. Atma Namaste. Om